Hello बच्चों, let's read the question. The quantity of charge in Faraday required to electrolyze 54 grams of H2O is. So हमें यहाँ पर 54 grams of H2O electrolyze करने के लिए कितना चार्ज रिक्वायर होगी ये हमें फाइंड आउट करना है. So key concept is charge required to electrolyze 54 grams of H2O. ये हमें पता करना. So देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे हो सकता है हम देखेंगे. H2O when electrolyzed it will give H2 gas and half O2. Okay. So यहाँ पर O2 कैसे होगा and H2 कैसे होगा. H2 2H plus ions will give will take 2 electrons. So 2 electrons ये लेता है तो हमें यहाँ पर क्या होगा H2 गैस रिलीज होगा. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है मतलब ये क्या है रिडक्शन. It is a cathode reduction is taking place here. And at anode what happens? At anode oxidation. It is a reduction reaction. Oxidation O minus. Here O2 आना है. इसके पास एक 2 electrons, 1 oxygen atom will release how many? 2 electrons. हमें half O2 release होगा by releasing 2 electrons. Okay. ये है हमारा electrolysis process. When 1 mole of water is electrolyzed, 2 moles Faraday is required charge. 2 Faraday charge is required to electrolyze 1 mole of water. हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है कि 54 grams. Number of moles given, number of moles is equal to given mass 54 divided by molar mass of water is 18. That is equal to 3 moles. Charge required is equal to number of moles multiplied by 1 mole के लिए कितना होगा. 3 multiplied by 2 that is equal to 6 Faraday charge is required to electrolyze 54 grams of water. Okay. I hope you understood it well. Thank you.